we're listening to. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Praise be to Allah, who has sent to His servant the book and has allowed therein no crookedness. He has made it straight and clear in order that He may warn the godless of a terrible punishment from Him, and that He may give glad tidings to the believers who work righteous deeds, that they shall have a goodly reward. The godless. Wherein atheists back in the day. वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे अरबी में क्या इन्होंने लिखा हुआ है. क्योंकि even the polytheists would have gods, the idols. Godless was basically in brackets. Godless was in brackets. So it is to warn. It is a book to warn. No, but what does it say in Arabic? Arabic में है ही नहीं. It's a book to warn anyone. हाँ. It doesn't have to be specific. वार्निंग के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ कि मोमिन या वो दोनों को वार्न करना है. मोमिनों को भी वार्न करना है. जो गलत कर रहे हैं काम, उन्होंने अपने काम फिक्स करने हैं, जो वो फिक्स कर लें. तो and give glad tidings to the believers. Believer यहाँ स्पेसिफाई किया हुआ है कि glad tidings to the believers, but warning सबके लिए है. ठीक है, क्योंकि everybody needs reminders, but glad tidings सिर्फ मोमिन को मिल रही है. Wherein they shall remain forever. Further, that He may warn those also who say Allah has begotten a son. Nauzubillah. No knowledge have they of such a thing, nor had their fathers. It is a grievous thing that issues from their mouths as a saying. What they say is nothing but falsehood. You would only perchance fret yourself to death following after them in grief if they believe not in the message. Now note that I'm doing modern English to thou, thy, and okay? Yeah, but what is perchance? Perchance means like it's an emphasis sort of a word, like you'll it's like a stronger version of perhaps. Perhaps maybe, but it's like the nature of the ayah is that Allah subhanahu wa ta'ala is trying to say to the Prophet sallallahu alaihi wasallam that you should, like, you might just worry yourself sick over them. What are you doing? You might just worry yourself sick over them. So you will worry yourself to death. So if they do not believe in the message, that which is on earth we have made but as a glittering show for it. जीनत को यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है glittering show. ठीक है, हाँ. Filled with attractions. Filled with attractions. Glitter, all that glitters is not gold वाली बात है ना, कि it's a shiny thing. Shiny. वो जो था उसमें. It's glittering, it's shiny, we like the shine. Covered in glitter. It's like since it's Surah Kahf है ना, Surah Kahf है, तो it's like end of times का probably one of the signs is that you will get too many distractions, too many good things. Cars, supercars, बनाए जा रहे हैं. TV, I think कितने साइज से शुरू होता है? 15 इंच, 20 इंच, 25, 35, 45, 50, 60, 85 तक तो चला गया. उसके बाद फिर वो मेगा स्क्रीन, सारे मेगा स्टूडियोज, घर के अंदर स्टूडियो, होम स्टूडियो, इस तरह के बनते जा रहे हैं. होम सिनेमाज, होम थिएटर कहते हैं ना, थिएटर इन द हाउस. तो लोगों का कोई वो है ही नहीं, दिस नेवर एंडिंग. तो ये इस तरह ये बताया जा रहा है कि इस टाइम पे शायद, क्योंकि ये सूरह कहफ ज़्यादातर एंड टाइम्स को डील करती है, तो इट्स टॉकिंग अबाउट कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी. लोग ऐसे लड़ेंगे चीज़ों के पीछे और पीछे भागेंगे चीज़ों के कि हम ये भी कर लें. तो people become very ambitious because how easy it is to do a lot of things nowadays. एंड ऑफ कोर्स लाइक यू हैव, अब तो पहले जैसे गाड़ियों में इस तरह नहीं होता था. गाड़ियों के वर्जन्स मेरा ख्याल 5, 7, 10 years के बाद आते थे न्यू मॉडल्स. अब लाइक एवरी ईयर देयर इज़ अ न्यू मॉडल, एवरी 2 years देयर इज़ अ न्यू मॉडल. व्हाई? बिकॉज पीपल आर चेंजिंग कार्स द वे दे चेंज मोबाइल फोन्स. एक ट्रेंड बन गया दिमाग के अंदर कि दिस इज iPhone, the old and the new. And with the new, this is you are holding iPhone 12. I have iPhone
15, 16, 20, so it's never gonna end. You might die at 20 and then your children will have 30 and 40 and so what if it's 12 or but फिर उन्होंने और भी ये ड्रामे कर लिए कि अपडेट ही नहीं करते iOS ताकि अगला बंदा नया खरीदे. So there are so many things. 12 is a big number. The newest one we have is XR. Yeah, but just imagine that this is just a game. When you realize it's a game, we started from 4, by the way. So iPhone 4, then XR पे आके समझ आ गई कि नहीं it's a game. Yeah. So we First we got 4, we shouldn't be fooled. Then 5. But we were then fooled 6, then a bit. 7, I mean, then X, ideally, then X. पहले ज़माने में before the cell phone started, we used to have a phone. ठीक है, वो पड़ा होता था डेस्क के ऊपर, उसकी लंबी सी तार होती थी. Everybody had those phones and nobody needed to change those phones. It was They so were there. exciting, you pick it up and वो 10 साल वही फ़ोन रहता था. ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. It was the least important thing in our lives. और अब इन्होंने फ़ोन को ये बना लिया है कि यार अच्छा फ़ोन्स के बारे में अच्छा, और फ़ोन ना भी हो तो एक सुकून होता था, एक पता होता था कि यार एक बंदा काम पे गया है, उसने वापस आना है इस टाइम पे. एंड द ओनली टाइम यू यूज्ड टू यूज़ द फ़ोन वाज कि यार बहुत ही कोई यानी हो जाए कि 2 सेकंड की कॉल की कि ओके आई एम गोना बी लेट, तो अच्छा ये वो बस परेशान ना होना, बस 2 मिनट की बात हुई ख़त्म. अब तो लोगों की फ़ोन कॉल ही नहीं ख़त्म होती. अब तो लोगों ने 10-10 घंटे बातें करनी है, फिर अच्छा और बहाने बन गए हैं, फिर और चीज़ें इवॉल्व हो गई. नीड्स एंड वांट्स हैव इवॉल्व्ड. नाउ ये जीनत के ऊपर जो बात हो रही है ना, इट्स अ वेरी बिग टॉपिक. एंड इसको आई थिंक अगर हम एक एक आया को लेके चले ना, ज़्यादा बेहतर होगा rather than rushing through it. Because what we can do basically an overview on the first. हाँ, overview कर लेते हैं. Next sessions. Overview भी कर लेंगे. But the fact, the consumerism और ये जो सारा चीज़ें हैं ना कि basically psychology, how they play with our psyche, they won't be able to play with your psyche if you know what are your needs and what are your wants. That's where it comes down to. Yeah. कि what are your needs and what are the things that you want. Things that you want are often the things that you don't need. Yes. ठीक है, and they are the things that mess you up. They mess up your life. They create clutter in your house. They create clutter in your head. They create clutter in your relationships. They create clutter in everything basically. If you want something and that didn't happen, you might fight with your friend or your siblings, or your have grudges against people. But that's something, if you sit and think about it, oh, that's just something I wanted, I didn't need it. Are my needs being fulfilled? Like husband wife में होता है कि अगर wife नाराज़ हो गई है, he didn't take me for say restaurant for eating, yeah, but yesterday I had a big chunk of steak at home, and so what if he didn't take me out on a Saturday for eating out? So what? The guy is fulfilling his duty. He's bringing food to the table. He's paying your bills. So what if he's not taking you out on a restaurant, on a weekend? तो वो want बना के, she might get a divorce over this fact that for the last 10 years he hasn't taken me to a restaurant, but he's paying your bills. He's bringing the food. He's doing everything. If he's doing it, not all. If he's doing it. So you have to have this emotional intelligence. Now second topic again, emotional intelligence. That you have to be emotionally intelligent That enough your to needs are know not necessary. that your needs. What are your needs? No, your needs wants. are Sorry, necessary. your Your wants are not necessary. Okay, See? You have to know. कोई बात नहीं हो जाता है. So your wants and your needs. Difference between your wants and your needs. And you have to make a diary and you have to write it down. And whenever you make a decision, you have to ask yourself. It's not like कि अल्लाह ताला ने मना नहीं किया हुआ बहुत सारी चीज़ों से that you want. अलाउ किया हुआ है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये भी कहा हुआ है नहीं, wanting things is not haram, but अल्लाह ने ये भी कहा हुआ है कि यानी इवन कुरान के अंदर ही आयत है कि किसने हराम की है अल्लाह की जीनत जो अल्लाह ने हलाल किया आपके ऊपर. तो अल्लाह ताला ने कहा है कि eat from the good things I've created for you. That doesn't mean कि अल्लाह ने मना किया है अच्छी चीज़ें लेने से. If you can afford something, you have the money, you like a good dress, you like a good coat, you like a good pair of shoes, go ahead and buy it and say Alhamdulillah. But if you can do charity instead, that's an act of ihsan, that's superior. But that doesn't mean that you will not get punished for liking or getting something you enjoy. But at the same time, Allah Ta'ala has said in the Quran that spendthrifts are brothers of shaitan.
ये भी कहा है कि किसी को इस तरह नहीं बात की कुरान में अल्लाह ताला ने। अल्लाह कहा जो ओवर स्पेंड करता है वो शैतान का भाई है। ब्रदर्स ऑफ शैतान ओवर स्पेंड करने वाले। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये नीड्स एंड वांट्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आई विल कंटिन्यू विद तो दाओ और वो जो है ना उसको मैं ज़रा चेंज कर रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हाँ दाओ दाए ये जो है ना उसको मैं थोड़ा कोशिश करके चेंज कर दूँगी। No knowledge have they of such a thing, nor had their fathers. It is a grievous thing that that issues from their mouths as a saying. What they say is nothing but falsehood. तो ये हमने ये वाली अभी आयत की थी ना कि शायद आप अपने आप को, इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है ना ये, ए पैगंबर ये इस कलाम पर ईमान ना लाएं तो शायद आप इनके पीछे रंज करके अपने आप को हलाक ही कर देंगे। So that which is on earth we have made but as a glittering show of it. In order, glittering show क्या होता है? जैसे हम एक और इसमें ध्यान में आता है कि जब दुकानों पे जाते हैं तो उन्होंने डिस्प्ले किया होता है, उस पर स्पॉटलाइट्स लगाई होती हैं। The displayed product is always the best. Yeah, they display their bestest possible thing. साफ करके चमका के पॉलिश करके और इसको ऐसे करके किया जाता है। And then it's 50% off on it, isn't it? हाँ एंड एक और चीज़ होती है दुनिया में शैतान के जो टूल्स हैं ना, शैतान को एक फ़ोटोशॉप की वो दी गई है। शैतान कैन फ़ोटोशॉप थिंग्स फॉर यू दैट आर नॉट दैट वे। सो व्हेन ही ट्राइज टू डिल्यूड यू, you might think there's something. I mean, look at that Lego technique. ठीक है, it's just lying about like anything over there. When it was in the box, when Yusuf didn't have it, हैं उस वक्त इसकी क्या वैल्यू थी? रोज़ आके मुझे कहता था मुझे when am I getting the Lego technique? When am I getting the Lego technique? Now he has it. वो उधर पड़ी है, वो उधर गया, वो कोई उसकी वैल्यू वैसी नहीं है वैसे। He's not as appreciated as Yes. So that's what happens. Like you guys appreciate it because you don't have it yet. But he just Not this. I'm just saying that when we don't have something, we like it, and when we get it, then it's not, that valuable. But anyhow, शैतान को ये पावर दी गई है या उसके ऊपर यानी वो जन्नात को ये है कर सकते हैं वो कि वो जैसे I think they can create Alter the looks of illusion create कर सकते हैं। Yeah. Illusionist देखी थी ना वो फिल्म? Illusionist, He creates Spider-Man Far From Home. वो भी इल्यूजन क्रिएट करता है। Yeah, वो जो था with the क्या नाम था drones. उसका, विद द ड्रोन्स एंड ऑल। हाँ वो फाइट पूरी फार फ्रॉम होम या फार अवे क्या था उसका Far From नाम? Home. ओके। वेरीली व्हाट इज ऑन अर्थ वी शैल मेक बट एज डस्ट एंड ड्राई सॉइल। ठीक है, पहली वाली आयत में था कि वी मेड अ ग्लिटरिंग, वी मेड अ जस्ट अ ग्लिटरिंग शो ऑफ इट इन ऑर्डर दैट